Well, we've got an interesting situation today. First time ever, we're doing an interview with two very important doctors in the community on a computer on my phone. So this is going to be very interesting, but the topic is essential. First of all, I'd like to welcome two doctors, Dr. Anwar Tufail and Dr. Waheed Abbasi. You may have heard the messages on our community messages about the COVID-19 vaccines and the boosters. So we're going to be talking about that. There may be times when I speak in Urdu, there may be times when I speak in English. So I hope that we all kind of understand what's going on. So first of all, I'd love to welcome you both, doctors. Thank you so much for coming on. This is a first for me, and I think that viewers know that I'm not always brilliant with technology. So if things go wrong, you know why, it's me. But welcome, Dr. Tufail and Dr. Abbasi. And can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you. And hello to you as listeners. Thank you. Okay. And Dr. Tufail, would you like to speak to our listeners? Yes, thank you. Thank you for having us on your program. And thank you, and assalamu alaikum to your viewers. Wa alaikum assalam from everybody. So, big question, first of all. Who can have a COVID-19 vaccine and a booster? So what age groups are we looking at, doctors? So, Anwar, do you want to start? Yeah, so everyone who is aged 5 and older can have their first or second dose of COVID-19 vaccine. People who are aged 16 and over, and some children who are 12 and 15, they can have. Anybody who is aged 75 and over, people living in care homes or older, and people aged 12 and over can have COVID vaccine. Okay, so the next question is then, how and where can people have their COVID-19 vaccination, and how do people book, and where can they actually go? Because there seems to be a lot more centres opening up. Yes, and Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak to everyone. Khair Mubarak. So people can book, everyone can book. There are three ways basically you can book your COVID vaccination. One is you go online. If you got access to internet, you can go online on www.nhs.uk/COVID vaccination, and you can book through the NHS website. That's the most common way. I think a lot of people book. People I know, they book through the website. You also can walk into a clinic. There are a number of walk-in clinics across Staffordshire, so people can walk in there. They're not every day, but then some designated days. And to find out the information about a walk-in clinic near you, you can basically visit National Grab a Jab walk-in clinic finder. So basically, if you Google Grab a Jab, and you can find a walk-in clinic near you. Or some people actually use NHS calling NHS 119. That's the national helpline 119, and calls are free to this number, and people can book their vaccination by calling 119. Okay, so I'll just translate a little bit of that into Urdu. I know that we've got community messages going out saying that where you can book. अभी डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि कई जगह आप कर सकते हैं, क्लिनिक भी होती है, और एक तो नंबर है 119 जो कि आपको पैसा देना नहीं है, मतलब पैसा नहीं देना है, और अपनी बुकिंग कर लें. और वेबसाइट भी है, लेकिन जिन लोगों को टेलीफोन इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान लगता है तो 119, और वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, फटाफट फ़ोन उठा लेते हैं, फिर आपसे सीधी बात कर लेते हैं. तो फिर दूसरी चीज़ कि मेरे ख्याल से कि दूसरी ज़बानों में भी वो लोग बात करते हैं, उर्दू भी है शायद, और दीगर ज़बानें भी हैं जो लोग अगर नहीं समझ पाते कि अंग्रेज़ी में क्या बोला जा रहा है, तो कम से कम ये तो आसानी हो जाती है. मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी. जो 119 है वहाँ पे आपको उर्दू में भी आपसे बात हो सकती है, और आपको पंजाबी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बात होती है उनके साथ. और दूसरी बात ये कि ये जो कॉल्स हैं ये बिल्कुल फ्री हैं. 119 की कॉल्स बिल्कुल फ्री होती हैं, तो आप बिल्कुल किसी टाइम पे भी डायल कर सकते हो. 24/7 आप कर सकते हैं. ये नंबर भी आसान है ना 119, तो याद भी रहता है.
बिल्कुल जी। आसान है। तो अब ये है कि आपसे तीसरा सवाल पूछ लेती हूँ, अंग्रेजी में फिर उर्दू में भी दोनों कर लूंगी आपसे. Is it okay to have the vaccine during Ramadan? And what is the advice from the British Islamic Medical Association? तो ये है कि रमज़ान के दौरान में वैक्सीन लगाना सही है, और जो मशवरा है आपके ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से क्या मशवरा है? रमजान में so yes, you can have vaccine during Ramadan, and it does not invalidate your, or it does not break your fast. The British Islamic Medical Association has reviewed this analysis, and they've discussed with the different Islamic scholars as well. They've confirmed that the vaccine does not invalidate your fast. If you are still unsure, I mean, some people are, then, perhaps you can discuss it with your local imam for the guidance. But as for the British Islamic Medical Association is concerned, it does not break your fast. Okay. तो जैसे डॉक्टर अनवर ने बताया, बिल्कुल जो वैक्सीन जो है वो एक ही रास्ता है और एक ही मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन है अगेंस्ट इस वायरस के, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए और आपके लव्ड वंस जितने भी हैं उनके लिए, और उसका बचाव का एक ही रास्ता है, उसके ये वैक्सीन है. हमने देखा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में और ईयर बिफोर के मुकाबले में डेथ्स और हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत कम हुए हैं इस वैक्सीन के साथ. जो रोजे की जो बात है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर अनवर ने कहा कि रोजा बिल्कुल नहीं टूटता. ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और खासकर जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के, उनकी वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. उनका व्यू ये है कि रोजा बिल्कुल नहीं टूटता. और जो मेरी लोकल इमाम है उनसे भी बातचीत होती रहती है, उनका भी यही व्यू है. लेकिन अगर आपको इस बात के बारे में अभी भी कोई शक हो कि हो सकता है आपका रोजा वैलिड ना हो और रोजा टूट जाए, तो बेहतर यही है कि आप अपने लोकल इमाम, मस्जिद के इमाम से बात कर लें. वो आपको इंशाल्लाह से इंफॉर्मेशन गाइडेंस दे देंगे. इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस जो वैक्सीन है, और ये जो ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है उनकी वेबसाइट पे भी है, उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके क्लिनिकल जो जेनेटिक्स के बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी जो इसमें ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन में, उनका व्यू ये कि इसमें ना तो कोई पोर्क होता है और ना कोई एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं या फीटल प्रोडक्ट्स होती हैं या अल्कोहल प्रोडक्ट्स होती हैं. तो ये बेसिकली बिल्कुल सेफ वैक्सीन हैं और जहाँ तक हो सके हमें इनको प्रमोट करना चाहिए. लेकिन इससे अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं है तो आप अपने लोकल इमाम से भी बात कर सकते हैं. जी. तो why should older people then have their fourth jabs or spring boosters? Aren't they protected anyway? This is a rumor, isn't it? It's floating around. So it's an interesting question, to be honest, really. I think that as you know, the older people and anyone, to be honest, with the immunity, if you have any vaccine, whether it's COVID vaccine or any other vaccine, with time, the immunity goes down. So if you had a vaccine, let's say flu vaccine, over the time, the immunity will go down. And that's why you need flu vaccine every 12 months. We encourage people to come for flu vaccine. With any vaccine, there's an immunity which lasts for so long. People who have got low immunity or immunocompromised, people who are frail, elderly, older people, with their immunity is low anyway, and with time it will dwindle, it will come down. And for that reason, that's why the Public Health England and NHS England is recommending that they should have their fourth dose or spring booster, which is starting now. अगर मैं एक तरह अपना मिसाल दे देती हूँ, हमारे एक जानने वाले हैं जिनके ये तीनों करा दिया उन्होंने, जो क्योंकि उम्र 70 के हो रहे थे, तो इन्होंने तीनों लिया है, उसके बावजूद भी उनको हो गया है, तो काफी बुरी तरह हुआ है. तो इसका ये मतलब है कि जो वैक्सीन, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई चंद महीनों के बाद इसके रूप बदल जाता है, कुछ थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है जिसको कहते हैं, तो इस वजह से कि फिर चौथा में ले लेना चाहिए. ये वजह है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन तो खत्म हो जाती है. जो कि वो भी करता है ना, बहुत बदलता है ना, जिसका नाम है कोरोना वायरस. हर 5 मिनट के बाद उसकी शक्ल कुछ और होती है, तो उसके कुछ और मसला, कुछ और अब सिम्टम्स ही कुछ बढ़ गए हैं. पहले तो सिर्फ 3 सिम्टम्स पे
تھا کہ بھئی ان 3 سمٹمز پہ ہو رہے ہیں. اب یہ ہے کہ میرے خیال سے 9 ہو گئے ہیں. آج میں نے کچھ دیکھا تھا کہ 9 ہو گئے ہیں سمٹمز. تو اس کا مطلب کہ یہ بڑھ رہا ہے اور تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور پریشانی زیادہ پھیلا رہا ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. اس کے شروع میں 3 سمٹمز تھے, اب کچھ اور ایڈ ہوئے ہیں میرے خیال میں. اب 10 ہو گئے, 9 اور 10 ہو گئے ہیں. کل میں نے رات کو پڑھا تھا جی, بالکل زیادہ ہو گئے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ شروع میں کچھ اور جو اسٹرین تھا, بعد میں اومیکرون آیا اور کچھ اور اسٹرینس بھی آئے, لیکن نمبرز واقعی زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی بھی بہت زیادہ وائرس ہے کمیونٹی میں. لاسٹ ویک آئی تھنک آپ نے پڑھا ہوگا کہ 4.5 ملین لوگوں کو کووڈ کا انفیکشن ہوا ایک ویک میں, جو کہ ہائیسٹ نمبر ہے تھرو آؤٹ دا پینڈیمک. تو وائرس بہت زیادہ ہے ابھی بھی کمیونٹی میں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو خاص کر جو ولنریبل لوگ ہیں, جو ایلڈرلی ہیں, جو اولڈر ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن کی امیونٹی کم ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویکسین لیں تاکہ وہ پروٹیکٹ رہیں. ابھی بھی ویکسین کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹل ایڈمیشنز بالکل بہت کم ہو گئی. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہاسپٹلس میں ہیں اور ڈیتھس بھی بہت کم ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ڈائی کر رہے ہیں. لیکن تو مین ریزن یہی ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے یا ہاسپٹل ایڈمیشن کم ہوا ہے, اس کی مین ریزن یہی ہے کہ لوگوں نے ویکسین لگوائے ہوئے تھے. ایون لاسٹ ویک میں اسٹیفرڈشائر میں میرے خیال میں 8 ڈیتھس ہوئی ہیں کووڈ سے. تو ابھی بھی کافی سگنیفیکنٹ لوگوں کی ہے. تو میسج یہی ہے کہ آپ ویکسین لیتے رہیں, اور اگر آپ کو ہو رہی ہے تو آپ ضرور لیں. میں اپنا مثال دے دیتی ہوں کہ ہم لوگ کو تو ویکسین وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا, تو ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اسی میں کووڈ میں. تو حالانکہ اتنا احتیاط کیا انہوں نے, وہ بالکل ہی وہ تھے سیلف آئسولیٹنگ ہے, جو کہ ان کو وہ ڈائلسس پہ ہوتے تھے. تو بالکل بس, لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں تھی. میں نہیں جا سکی چونکہ مجھے کووڈ تھا. میرے بچوں کو پھر بھی اجازت مل گئی تھی, لیکن جب وہ جا رہے تھے دنیا سے, ہم نے کیا زوم پہ دیکھ کے کیا ان کو خدا حافظ. تو وہ تو پھر وہ بات نہیں رہی. بچے تو تھے اللہ کے شکر ان کے پاس, لیکن ایک عجیب کیفیت تھی. تو مجھے پتا ہے کہ یہ کووڈ-19 جو ہے کہ اندر آپ کو کیا کیا کرتا ہے. دوسری چیز ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میری خون کی کمی ہو گئی ہے, انیمیا ہو گیا اس کی وجہ سے, اور ہماری امی کو ورٹیگو ہو گیا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, تو یہ بعد میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ ضعیف ہیں, جو کمزور ہیں, جن کی طبیعتیں تھوڑی وہ نازک ہیں, تو ان کی حفاظت کرنا لازمی ہو جاتا ہے. جی بالکل. اب جس طرح ڈاکٹر وحید عباسی نے ابھی فرمایا کہ جب امیونٹی کم, کیونکہ ویکسین کے ساتھ جب ٹائم گزرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ویکسین کا افیکٹ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے جو ضعیف لوگ ہیں, جو 75 سال سے زیادہ ہے ان کی عمر, یا 75 سال ہے, یا جن کی امیونٹی کم ہے, ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ویکسین لگائیں. اور یہ اسپرنگ بوسٹر کا جو ہم لوگ بار بار اپنے میڈیا میں بھی سنا ہوگا ذکر ہو رہا ہے, وہ چوتھا جو ڈوز ہے وہ لگانا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی امیونٹی پھر بڑھے گی. ایٹ دا مومنٹ کیونکہ کیسز بھی زیادہ ہو رہے ہیں کمیونٹی میں, جی جیسے کافی لوگوں سننے کو آیا ہے. جی کم از کم جنوری سے لے کے اب تک میرے خیال سے میں نے 15 کا سنا ہے. جب ہم لوگ شروع میں کووڈ ہوا تھا تو کسی کا نہیں سنا تھا. تو اس کا مطلب پھیل تو رہا ہے, کافی زیادہ پھیل رہا ہے, اور جلدی پھیل رہا ہے, یہ بھی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ اپنی احتیاط بھی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے ویکسین کے ساتھ. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال ہے, how long do people have to wait between doses? تو آپ نے ایک دفعہ تو لگوا دیا ٹیکا, تو پھر آپ کتنا دیر انتظار کرنا دوسرے والے کے لیے, تیسرے کے لیے, یا چوتھے کے لیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی تو آپ کسی بھی ٹائم اپنا پہلی ویکسین, سیکنڈ ڈوز, اور اس کے بعد پھر بوسٹر لگا سکتے ہیں. اگر آپ 18 سال سے زیادہ ہیں, یا اف یو آر اوور 18, تو آپ کو سیکنڈ ڈوز جو ہے آپ کی 2 ڈوزوں میں 8 ویکس کا ڈیوریشن ہونا چاہیے. سو you should have your second dose from 8 weeks after your first dose. اگر آپ 16 سے 17 ایئرز اولڈ ہیں تو سیکنڈ ڈوز اور فرسٹ ڈوز میں 12 ہفتوں کا یا 12 ویکس کا ڈیوریشن ہونا چاہیے.
जो बच्चे 5 से 11 साल तक हैं और जिनकी कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन नहीं है, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, वो तकरीबन उनकी 2 डोजों में 12 वीक्स या 3 महीनों का तकरीबन टाइम होता है। जो 5 से 11 साल के बच्चे हैं जिनको जो एट रिस्क हैं, जिनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक है, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनके लिए 8 weeks apart, so their time duration is 8 weeks. बच्चों के लिए खासकर जो वैक्सीन है वो बच्चों की अपनी डोज है जो एडल्ट से थोड़ी सी स्मॉल है, और उसके बाद बूस्टर जो 3rd डोज है उसमें आपका जो 3rd डोज फॉर बूस्टर इट्स 61 days between after your 2nd dose. It मीन्स के आपको तकरीबन 2 महीने का ड्यूरेशन है आपकी दूसरी डोज और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज कहलाती है। उसके बाद जो स्प्रिंग बूस्टर है जो चौथी डोज है वो 6 महीने, सो आपकी जो 3rd डोज और बूस्टर स्प्रिंग बूस्टर में तकरीबन 6 महीने का ड्यूरेशन और 6 months ड्यूरेशन मैक्सिमम जो है वो चाहिए। That's not bad really, is it? It's not really that long, is it? No. शुरू में थोड़ा वक्फा जो है वो थोड़ा फिर बाद में लंबा हो जाता, which is fine, I'm sure we can survive that. Okay, now this is interesting, a very interesting question. If someone has tested positive for COVID-19, how long do they have to wait for the next vaccine? Again, if you're COVID positive, if you're aged 18 and older, you have to wait for 4 weeks. Mm-hmm. So if you are children and young people between age 5 and 17 years of age, they have to wait for 12 weeks if they contract COVID-19. Yeah, because it's a very strange setup, isn't it, this COVID-19? Because it's very different from anything we've ever experienced, isn't it? Absolutely. And the other thing is, there's a very, very serious question because there's a lot of information that's out there, different types of information out there. Will the vaccine affect anyone's fertility or the fertility of children in the future? Because there's a lot of debate, isn't there, in certain parts of the community? And I think this is quite a delicate one. बिल्कुल जी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे मिथ्स हैं इसके बारे में। आंसर एक ही है कि बिल्कुल नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जो वैक्सीन की वजह से किसी की फर्टिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। और कोई एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट फ्यूचर में भी और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर आपने रिसेंटली आप प्रेग्नेंट हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं, सेफ है और बेहतर है क्योंकि आप हाई रिस्क होते हैं। और वैक्सीन के बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल ये मिथ्स हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई क्लिनिकल एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। Yeah, I think there's a lot of concern because it's a very delicate one. I know that in the community there are a lot of girls who are being told by the families, oh no, don't take it because you'll end up not being able to have small persons, and then of course they're now more at risk, aren't they, of getting it, and then they're more at risk of spreading it as well. Because I think as Muslims we have a responsibility not to make other people ill. And if we're deliberately carrying the virus around with us, if we're deliberately inviting the virus, and we may be carriers, we may not be affected, but we jolly well affecting other people, aren't we? And I think that's the issue as well. We've got to be so careful because it's not an easy one to deal with. I'm sure that doctors, if you've been on the ICU, which I'm sure you have, it's a terrible thing to be observing when people are really, really ill with it, when they're on ventilators and so on. And I think that you wouldn't want your loved ones to go on a ventilator. You wouldn't want them to be on about 5 different machines. Sorry, doctor. No. You're absolutely right. I think there is, it's really hard, but just as Dr.
Abbasi was saying about pregnant ladies or having this vaccine, because at one point we saw a lot of pregnant ladies getting really ill because they did not receive this vaccine, and because of some of these myths which are around that it affects fertility, as Dr. Abbasi was saying, it does not affect fertility for men or for women, and the child who is coming into this world, it does not affect them in any way or form. If somebody wants any more information, there is some helpful information available on British Fertility Society website, which is www.britishfertilitysociety.co.uk. Wow, we've covered a lot, haven't we? So is there anything else, doctors, you would like to add? Because I'm sure that there's a whole lot of stuff out there that, the public doesn't know about. Is there anything specific that you feel is important that we should all know about? जो आपका question था about if you tested positive for COVID and how long you need to wait, तो उसके बारे में ये है कि डॉक्टर अनवर ने जैसे बताया इंग्लिश में, तो मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ ताकि सबको पता चले। अगर आपकी एज 18 या उससे ऊपर है तो आपको 4 वीक्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर चिल्ड्रन है 5 से 17 साल 5 to 17, उनको 12 वीक्स वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा, सीवियर अस्थमा है या और कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम रिस्क है 5 to 11, उनको सिर्फ 4 वीक्स का वेट करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग द डोज इफ यू टेस्टेड पॉजिटिव। Because some of the side effects of COVID का जो side effect होता है ना कि वो आपके सांस, आपके फेफड़े और इस पे काफी असर डालता है। तो बच्चों को तो जो अस्थमा है, और हमारी कम्युनिटी में अस्थमा काफी है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हमारे बच्चों में भी है, हमारे वालिदैन में भी है। तो जाहिर है, तो फिर अपनी हिफाजत, तो अगर आपके पास है मौका तो इसका फायदा क्यों ना उठाएं। तो दूसरे मुमालिक में आपको तो पैसा देना पड़ता है और इंतजार भी करना पड़ता है, और ये भी नहीं पता है कि असली है या नकली है या जाली। यहाँ पे तो कम से कम आपको पता है कि ये तमाम चीज़ों की जो है वो टेस्टिंग होती है, तमाम चीज़ों की क्या कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल वगैरह होती है, कि सख्ती तो बहुत है इस मुल्क में। तो ये है कि अगर आपको सही मिलता है और आपको सही डॉक्टर या नर्स लगा रहे हैं तो फिर इसका कोई वो मसला ही नहीं। क्योंकि मैंने लगवाया है तीनों, तो मुझे कभी बुखार नहीं हुआ। थोड़ा सूजन हो गई थी बाजू में, लेकिन बुखार नहीं था। बाजू लोग कहते हैं कि उनको बुखार चढ़ गया तो टांगों में दर्द हो गया था। लेकिन ये कि पैरासीटामोल खा के, मेरे ख्याल से पैरासीटामोल खा सकते हैं ना इस सूरत हाल में, अगर आपको ये हो रहा है। बिल्कुल जी, अगर आपको बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों को हुए हैं, जैसे बुखार हो गया या जिस्म में दर्द शुरू हो गया, टायर्डनेस हो गई है, जैसे आपके केस में थोड़ा सा सूजन होगी बाजू में, ये है नॉन साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के। लेकिन ये बहुत सारे अदर वैक्सीन के भी हैं। फ्लू वैक्सीन के साथ भी आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस तरह का हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो एक तो जो है वो जैसे आपने कहा कि पैरास्टामोल ले लें 2 टैबलेट्स, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। मेक श्योर कि आप पानी भरा पीते रहें और हाइड्रेटेड रहें। तो रमज़ान में थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपको रोज़ा रखा हुआ है और आपने वैक्सीन लगवाई है, और जैसे कि कोई रीज़न नहीं है कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, रोज़ा रखें। लेकिन अगर आपको ये होता है तो अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो बेशक हो सकता है आपको रोज़ा तोड़ना पड़े, आपको फिर रोज़ा बाद में किसी डेट पे रखना पड़ेगा। तो इस सूरत में आप पैरास्टामोल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हम लोगों ने, मैंने भी 3 लगवाई हैं, चौथी इंशाल्लाह ड्यू है, 4 जल्दी हो जाएगी, और आई एम श्योर कि मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। जी, मुझे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। तो बिल्कुल, तो जैसे डॉक्टर वहीद अब्बासी कह रहे थे कि कभी थोड़े से साइड इफेक्ट्स, थोड़ी सी बुखार या सोजिश, इसके अलावा कोई ख़ास साइड इफेक्ट्स नहीं जिनकी वजह से हम वैक्सीन ना लगाएं। बिल्कुल। तो ये है कि और कोई ख़ास बात जो आप लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो। जी, लगता है आपने बहुत कुछ कवर किया है। नेक्स्ट 25 मिनट में बहुत सारी बातें आपने कवर कर ली हैं, तो थैंक यू सो मच हैविंग अस। मेरा सिर्फ एक ही वो है, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ सबसे कि अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लगाया तो प्लीज़ कोविड वैक्सीन आप लगाएं। आप
डॉक्टर अब्बासी ने बताया कि कहाँ से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने जो प्रिकॉशंस हैं, हाथ धोएं, जहाँ पे आपको मास्क पहनना हो तो मास्क भी पहन लें, क्योंकि इससे कोविड के जो स्प्रेड है वो हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगाने के साथ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। Thank you very much for having us on the program. Well, thank you for being here, doctors. Thank you. So that was Dr. Abbasi, Waheed and Dr. Anwar Tufail. I was joined by two very important doctors to talk about COVID-19 and the vaccine and the importance and responsibility of having the vaccine. And thank you so much for taking the time to come onto my program. And Ramzan Mubarak, and I wish you a fantastic Ramzan and a fantastic Eid as well. Thank you for everything that you do for all of us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. Allah Hafiz and Fi Aman Allah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.